Class 10 CBSE Maths Chapter 4 Quadratic Equations. I am going to explain you how to solve quadratic equation. There are actually three methods of solving. We will be discussing two methods today. One is factorization method, another is formula method. You all know that ax square plus bx plus c is equal to 0 is a general form of quadratic equation. We can solve this by splitting the middle term. Split and take common and get x values. You will get two values of x, and the values of x are called roots, and roots are denoted by alpha and beta. So splitting the middle term is nothing but factorization method. Okay. So the first method is by factorization, that is splitting the middle term, resolving into factors. The next method is formula method. So we have the formula to find the roots, and the formula is alpha comma beta is equal to minus b plus or minus b square minus 4ac under root by 2a. This is the formula to find the roots of a quadratic equation. Okay, so two methods we will be discussing. One is factorization method, that is splitting the middle term, and formula method. Formula is minus b plus or minus under root b square minus 4ac by 2a. Let us take one quadratic equation and let us find the roots by two methods. One is factorization method, another is formula method. Firstly, I will be showing you factorization method. In factorization method, you will be multiplying first term and last term. You will be multiplying these two terms. Just multiply. You are getting minus 10x square. You should split this in such a way that when you simplify, you should get minus 3x. And when you multiply, you should get this minus 10x square. For that, first of all, write down the possible ways in which you can get minus 10, in which you can get 10. 10 ones are 10, okay? 2 5s are 10. These are the two ways in which I can get 10. So this combination is better combination, so that I can get 3. So I am taking this combination. I can write minus 5x and plus 2x. When I subtract, I am getting minus 3x. When I multiply, I am getting 5 2s are 10, plus into minus minus, x into x square, minus 10x square I am getting. So let us write down the middle term. This middle term, now we will write this middle term as minus 5x plus 2x. This x square will remain as it is. Minus 3x. Instead of minus 3x, I will write
minus 5x plus 2x. And the last term is minus 10 is equal to 0 will be written as it is. Take x as common. X and 5 will remain. Take 2 as common. 2 5s are. You will get same term in the middle. Take that as common. If you take x minus 5 as common, here x will remain and 2 will remain over here. Equate x is equal to 5, x is equal to minus 2. So one value of x is called alpha, the other value of x is equal to beta. Got it? So we got two values of x, one is alpha, one is beta. So through factorization, I got alpha, beta, which are roots of the quadratic equation. Now let us apply formula method. Take down the quadratic equation. X square minus 3x plus 10 minus 10 is equal to 0. What is the general form? Ax square plus bx plus c is equal to 0. What is a value? 1. B value minus 3. C value minus 10. Now after getting ABC values, apply the formula. Alpha beta is equal to minus b plus or minus b square minus 4ac under root by 2a. Alpha comma beta is equal to minus. What is b value? Minus 3. What is b square? Minus 3 square. 4ac. 4 into 1 into minus 10. Okay. A is 1. C is minus 10 by 2a. 2 into what? A value? 1. Now next step. Alpha comma beta is equal to, tell what is minus into minus? Plus. 3 square is 9. 4 tens are 40. Minus into minus plus under root. 2 ones are 2 in the denominator. What is 40 plus 9? 49. Alpha beta is equal to minus 3 plus or minus 49 root by 2. What is square root of 49? 7. In alpha, you will be taking plus 7. In alpha, you will be taking plus 7. Yes, this here one thing. So minus into minus is plus. By mistake, I wrote here minus. Remove this minus. Yes, no need of this minus. So in alpha, you will be taking plus sign. In beta, you will be taking minus sign. So minus is taken in case of beta, plus is taken in case of alpha. So alpha is equal to 10 by 2, 2 exactly 5 times. Beta is equal to, what is 3 minus 7? Minus 4 by 2, 2 exactly 2 times. Beta is equal to minus 2. So I got the roots as 5 comma minus 2 with formula method. And in the factorization method also I got 5 comma minus 2. So in any case, whether you apply formula method or factorization method, you will get same answer
Okay, so roots are pi comma minus 2. Solve the quadratic equation by factorization method and formula method. Let us write the given quadratic equation in the next page. First, I am going to show you factorization method. पहले आप ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई करना है. फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों को मल्टीप्लाई करना है. तो क्या आएगा आपको? एक्स स्क्वायर इंटू 5 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर को 2 पार्ट्स करना है. ओके, तो जब आप ऐड करेंगे आपको ये मिडिल वाला आना है. मिडिल वाला क्या है? 6x आना है. तो 5 का कॉम्बिनेशन क्या है? 5 को कैसा लिख सकते हैं आप एक बार चेक करो. 1 5 लिख सकते हैं और कोई कॉम्बिनेशन नहीं है. 1 5 सो यहां पर मैं 1x और 5x ले सकता हूं क्योंकि जब मैं ऐड करा 1 + 5 6x आ रहा. मल्टीप्लाई करे तो 1x इंटू 5x 5x स्क्वायर. सो मल्टीप्लाई करने से ये आना है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से ये आना है. तो कंडीशन सेटिस्फाइड है. तो अब आप आगे प्रॉब्लम में 6x के बदले में ये ले सकते हैं आप x स्क्वायर. 6x के बदले में आप क्या लिखना? 1x + 5x + 5 इज इक्वल टू 0. फर्स्ट टू टर्म्स में कॉमन क्या है? देखिए फर्स्ट टू टर्म्स में x कॉमन है. यहाँ ax कॉमन लेने के बाद x स्क्वायर में से एक x जाने के बाद और एक x बचेगा. x कॉमन हो गया तो 1 बचेगा. ओके, यहां दोनों टर्म्स में 5 कॉमन है. 5 कॉमन लेने के बाद x बचेगा. 5 में 1 टाइम. ओके, तो आप एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं. क्रॉस चेकिंग x इंटू x स्क्वायर, x इंटू 1 1x, 5 इंटू x 5x, 5 1 5. सो क्रॉस चेक हो गया. आप कॉमन सही लिए. अभी कभी ऑलवेज ये ब्रैकेट में का टर्म सेम रहना. तो आप x + 1 को कॉमन लिए तो x + 5 बचेगा. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 0 कब हो सकता? दोनों में एक 0 रहना जरूरी है. When you multiply two things, if you are getting 0, that means either one of them is 0. देखिए, एक भी 0 रहना जब भी आपको 0 आ सकता. दोनों भी 0 नहीं है तो 0 आ ही नहीं सकता. सो यहां पर प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं. यहां पर ये दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो 0 आ रहा. तो फर्स्ट वन तो भी 0 रहना या सेकंड वन तो भी 0 रहना. यही रीजन है कंपेयर करने का 0 से. अगर फर्स्ट वन 0 है तो x का वैल्यू -1 है. सेकंड वन 0 है तो x का वैल्यू -5 है. x का वैल्यू उसको रूट्स बोलते हैं. रूट्स को डिनोट करते अल्फा और बीटा से. अल्फा इज इक्वल टू -1, बीटा इज इक्वल टू -5. These are the roots of the quadratic equation. We have solved it using factorization method. Now factorization method is done. We got the roots. Let us do formula method. First of all, write down the general form of quadratic equation.
and find out ABC values. Coefficient of x square is 1, so A value is 1. B value is coefficient of x, that is 6. C is constant 5. And the formula to find the root C is minus b plus or minus under root b square minus 4ac by 2a. B value is 6 plus or minus 6 square minus 4 into 1 into 5. So A is 1, C is 5 by 2A. So alpha comma beta is equal to minus 6 plus or minus, what is 6 square? 6 6 are 36. 4 5 are 20 by 2 1s are 2. Minus 6 plus or minus 36 minus 20 is 16. What is square root of 16? 4. 4. Square root of 16 is 4. In alpha you will take plus. You will get minus 2 by 2, which is nothing but 1. In beta you will take both minus 10 by 2, which is nothing but 5, minus 5. So we got the roots as minus 1 comma 5. That's it. So this is minus 5. Here minus is there. So we got the same answer, whether it is factorization method or formula method, we get same answer. Solve the quadratic equation by factorization method and formula method. The given quadratic equation is x square plus 2 root 2x minus 6 is equal to 0. Let us do factorization method first. As usually, you should multiply the first and last term. On multiplying, you will get x square into minus 6 is minus 6x square split into two parts, so that when you simplify, you should get 2 root 2x, and when you multiply, you should get minus 6x square. Okay. So I would like to take 3 root 2 minus root 2 x. What is 3 root 2 minus root 2? 2 root 2. Yes or no? When you subtract 3 root 2 and root 2, you will get 2 root 2. When you multiply 3 root 2 x into root 2 x into x square, 3 as it is, root 2 into root 2, root 2 square and root will get cancelled. 3 2s are 6x square. Are you getting 6x square? And this is having minus. Second one is having minus, plus into minus, minus 6x square. Hope you understood why I have taken 3 root 2x minus root 2x. Okay. Now go back to the question. Once again, I would like to explain this part.
3 root 2x minus root 2x is 2 root 2x. On multiplying, we get minus 6x square. Why? Because root 2 into root 2 is 2. 3 is already there. X into x is x square. Plus into minus is minus. So we get minus 6x square on multiplying. So condition is satisfied. On multiplication, we are getting this one. On addition or subtracting, we are getting this one. Okay. Now let us write this term. This term will be written like this. So please write down x square plus, write down this one. 3 root 2x minus root 2x, and write down the last term. Start taking common from the first two terms. What is the common from the first two terms? X is the common. 1x will remain. 3 root 2 will remain. You can cross check x into x, x square. X into 3 root 2, 3 root 2x. Similarly, take common from the next two terms. Here, the common can be minus root 2. On taking minus root 2 common, x will remain. As I have taken minus as common, this minus will become plus. So what else will remain on taking root 2? I think 3 root 2 will remain inside. What will remain? 3 root 2 will remain. You just cross check once. Minus root 2 into x is minus root 2x. It is already there. Minus root 2x. It's there. Minus into plus is minus. See here, root 2 into 3 root 2. Root 2 into root 2 is 2 into 3, 6. You are getting minus 6. Now check whether the terms inside the bracket are same or not. ब्रैकेट के अंदर सेम है या नहीं है, एक बार चेक करना जरूरी है. हमेशा आपको सेम आना चाहिए. जो भी ब्रैकेट में है उसको कॉमन ले लीजिए और बचा x है और माइनस रूट 2 है. इज इक्वल टू 0 लिखना मत भूलो. ये दोनों मल्टीप्लाई करे तो 0 आ रहा, तो पहला वाला तो भी 0 रहना या दूसरा वाला तो भी 0 रहना. इक्वेट करिए. फर्स्ट टर्म x प्लस 3 रूट 2 इज इक्वल टू 0. ट्रांसपोज करिए. x इज इक्वल टू माइनस 3 रूट 2. इजंट इट? सेकेंड टर्म को 0 से इक्वेट करिए. x माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू ट्रांसपोज करने से रूट 2 मिलेगा. वैल्यूज ऑफ x को रूट्स बोलते. रूट्स आर अल्फा इज इक्वल टू माइनस 3 रूट 2, बीटा इज इक्वल टू रूट 2. जरूरी नहीं है ये अल्फा ही रहना, ये बीटा ही रहना. आप चाहे तो अल्फा इज इक्वल टू रूट 2, बीटा इज इक्वल टू माइनस 3 रूट 2 लिख सकते हैं. ओके, नॉट कंपल्सरी अल्फा फिक्स्ड बोल के, ऐसा नहीं है. सो अल्फा इज इक्वल टू माइनस 3 रूट 2, बीटा इज इक्वल टू रूट 2. ये है रूट्स. फैक्टराइजेशन मेथड से आपको रूट्स
अल्फा बीटा क्या आया? अल्फा बीटा -3√2 बीटा √2। अभी फॉर्मूला मेथड देखिए, उसमें क्या रूट्स आते हैं एक बार चेक करेंगे। Now let us find the roots using formula method. First of all, write down standard form of quadratic equation. Here coefficient of x square का coefficient 1 है, so a का वैल्यू 1। x का coefficient 2√2 है, कंपेयर करने से b is equal to 2√2। इसी तरह c is equal to -6। Substitute these values in the formula, and the formula is alpha comma beta is equal to -b plus or minus b square minus 4ac under root by 2a। नेक्स्ट पेज में सब्स्टिट्यूट करेंगे। अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस b वैल्यू 2√2 minus b plus or minus b square 2√2 whole square minus 4ac a1 c minus 6, a is 1, c is minus 6, 4ac by under root, please write down root 2a, a वैल्यू 1 है, तो बोलिए क्या आता अल्फा बीटा? -2√2 प्लस और माइनस 2√2 होल स्क्वायर। क्या है 2√2 होल स्क्वायर? 2 स्क्वायर √2 स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, 4 2 जा 8, सो 2√2 होल स्क्वायर का वैल्यू 8 माइनस इंटू माइनस हाउ मच प्लस 4 6 जा 24 by 2। okay, 24 plus 8 is how much? -2√2 plus or minus 24 plus 8 is 32 root by 2। 32 रूट को आप कैसा लिख सकते हैं? -2 ध्यान से देखिए, -2√2 माइनस लिखिए, बोलिए मैं यहाँ माइनस मेंटेन करिए। 32 रूट को आप 16 2 जा लिखो। 32 is nothing but 16 2 जा by 2। रूट सेपरेट करो। What is square root of 16? 4। 16 का रूट 4 और रूट 2 एज इट इज बाई 2। अल्फा में प्लस रहता, अल्फा में प्लस रहता 2√2 प्लस 4√2 बाई 2। बीटा में माइनस रहता, इन बीटा व्हाट विल यू गेट? ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, 4 माइनस 2 क्या होता बेटा? 2√2 by 2, 2 cancel, alpha is equal to how much? √2। ओके, ध्यान से देखिए, यहां पर मैं
सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं क्योंकि सिमिलर सर्ड है, दोनों भी रूट टूस है, दोनों भी रूट टूस है, तो प्लस माइनस है तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना, इस वास्ते सब्ट्रैक्ट करा। 4√2 में से 2√2 निकाले तो 2√2, बिगर नंबर साइन प्लस है, √2 कैंसिल होके आपको √2 कैंसिल होके आपको 2 बचा, सॉरी 2 कैंसिल होके √2 बचा, है ना बेटा। 2 और 2 कैंसिल होके √2 बचा। यहां पर दोनों माइनस है तो add and put minus, 2 will go 3 times, beta is equal to -3√2. So your final answer alpha beta क्या है बेटा, alpha √2 beta -3√2। चेक करिए फैक्टराइजेशन में आपको क्या आया आंसर। यस, एक √2 आया और एक -3√2 आया। सेम आंसर आपको यहाँ पर फॉर्मूला मेथड में आपको √2 एक रूट है, -3√2 एक रूट है। अल्फा बीटा एक्सचेंज होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अल्फा बीटा वैल्यूज फिक्स नहीं है, दो रूट्स है बस। आप एक को अल्फा से डिनोट करो, कौन सा भी एक को अल्फा से डिनोट करो, कौन सा भी एक को बीटा से डिनोट करो। तो आप देखिए अभी फॉर्मूला मेथड में भी और फैक्टराइजेशन मेथड में भी रूट्स सेम आए। Solve the quadratic equation using both the methods, factorization method as well as formula method. First of all, let us do by factorization method. In this method, we multiply the first term and the last term. We get √3x square into 7√3 will give you, first of all, 7 √3 into √3 is √3 square and x square. So I am getting square and root cancel. 7 3s are 21x square. Okay. So in the middle I am having 10x. This must be split into two parts such that when I add or subtract, I should get 10x. When I multiply both the parts, I should get 21x square. So for that, I will check the factors of 21. 21 can be written as 121s, or else you can write 3 7s. I think this will fit in the space. Why? Because 7 plus 3 is 10. 7 into 3 is 21. So take 3x plus 7x. On adding, I will get 10x. On multiplying, I will get 21x square. Okay. So this combination is perfect. This is perfect. This is not required here. Okay. Now this 10x will be written as 3x plus 7x. Let us write in the next page. √3x square, 10x is written as 3x plus 7x, and lastly we are having 7√3. At the end we are having 7√3 is equal to 0. Got it? Now I would like to write this 3.
I would like to write this 3 as root 3 into root 3. Why? Because root 3 into root 3 is 3 only now. 7x plus 7 root 3 is equal to 0. But I wrote 3 as root 3 into root 3 so that I can easily show you how I have taken common. To कॉमन कैसा लिया गया है क्लैरिटी के वास्ते 3 को मैं लिखा √3 इंटू √3. ऐसा लिखने से आपको अच्छा समझ में आता कि कॉमन क्या लिया गया है. ये दो टर्म्स में कॉमन √3x इज टेकन. √3 कॉमन, एक्स स्क्वायर में एक x कॉमन और एक x बचेगा. नेक्स्ट √3 कॉमन, x कॉमन, बचा क्या है? ये प्लस एज इट इज लिखिए और ये बच गया, √3 बचा. ऐसा कॉमन लेना चाहिए. ओके, क्रॉस चेक करो. √3x इंटू एक्स, √3x स्क्वायर. √3 इंटू √3, 3x. So now common in the next two terms. Last two terms में common 7 हो सकता. 7 common हो सकता. 7 को common लीजिए. X will remain and √3 will remain. Check inside the bracket. Bracket के अंदर same आना. दोनों brackets के अंदर कभी different नहीं आना. x प्लस √3, x प्लस √3. अगर अलग आया तो आप गलत करें. सो x प्लस √3 को कॉमन लेने से, x प्लस √3 को आप कॉमन लेने से √3x और प्लस 7 बचेगा. अब इक्वेट करिए 0 से. आप क्या आएगा आपको? x प्लस √3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस √3. एक वैल्यू आ गया x का. दूसरा इक्वेट करिए, √3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, √3x इज इक्वल टू माइनस 7, x इज इक्वल टू माइनस 7 बाई √3. तो यहाँ लिख सकते हैं आप अल्फा माइनस √3 है, बीटा माइनस 7 बाई √3 है. सो ये है फैक्टराइजेशन मेथड. एक बार देखिए, 10 को स्प्लिट करें, 3x प्लस 7x. 3 को लिखे √3 इंटू √3. उसके बाद कॉमन लिए आपको अल्फा बीटा वैल्यूज आ गए. अब फॉर्मूला मेथड. नाउ सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन using formula method. Write down the standard form of quadratic equation. Ax square plus bx plus c is equal to 0. What are ABC values? A is equal to √3, b is equal to 10, c is equal to 7 √3. The formula to find the roots is alpha beta is equal to minus b plus or minus b square minus 4ac under root by 2a. Let us substitute alpha comma beta is equal to minus as it is. B value, what is B value? 10. Plus or minus as it is. Square root as it is. B square, what is B square? 10 square. What is A? √3. What is C? 7 √3 by 2a. बोलिए बेटा a का वैल्यू √3. सब्स्टिट्यूशन डन.
alpha comma beta is equal to minus 10 plus or minus minus 10 plus or minus under root. बोलिए 10 स्क्वायर कितना 10 स्क्वायर 10 टेंजा 100 4 7 जा बोलिए 4 7 जा 28 root 3 into root 3 will become root 3 square. Square and root cancel by 2 into root 3 क्या होगा 2 root 3. Done. Now next step, alpha comma beta is equal to minus 10 plus or minus 100 minus 28 3s are 28 3s are 3 8s are 24 3 2s are 6 7 84 by 2 root 3. Next page 800 minus 84 16 है. नेक्स्ट पेज में अपन 100 minus 84 को क्या लिखेंगे 16. अल्फा बीटा इज इक्वल टू minus 10 प्लस और माइनस रूट 16 बाय चेक करो डिनोमिनेटर 2 root 3. व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 16 minus 10 plus or minus 4 by 2 root 3. यहां ध्यान से देखिए अल्फा में प्लस लेना है ये प्लस लेंगे अल्फा में minus 10 plus 4 by 2 root 3 minus 10 plus 4 minus 6 by 2 root 3 2 how many times 3 times so अल्फा कितना आया minus 3 by root 3 आया. बीटा में माइनस लेना ये माइनस लेंगे आप minus 10 minus 4 by denominator as it is 2 root 3. Got it? बोलिए बीटा क्या है minus 14 by 2 root 3 2 कितने टाइम्स 7 times beta is equal to minus 7 by root 3. Let us check. minus 7 by root 3 perfect. minus root 3 ये थोड़ा आपको यहाँ पर आपको रेशनलाइज करने से रूट 3 से मल्टीप्लाई रूट 3 से डिवाइड करने से आपको क्या आएगा देखिए बेटा न्यूमरेटर में -3 रूट 3 आएगा रूट 3 इंटू रूट 3 3 आएगा 3 3 कैंसल which is nothing but minus root 3. So alpha is equal to minus root 3, beta is equal to minus 7 by root 3. आपको फॉर्मूला मेथड में आए और फैक्टराइजेशन मेथड में भी सेम आंसर आपको मिलेगा minus 7 by root 3 minus root 3. Now, first of all, in factorization method, first of all, let us see the question. Solve the quadratic equation using factorization method and formula method. The given quadratic equation is 8x square minus 22x minus 21 is equal to 0. Let us start factorization method. In this method, we will have to multiply it first and last term. That is 8x square should be multiplied to minus 21. So on multiplying, I will get 8 ones are 8. 8 twos are 16 minus 168x square, isn't it? We can check plus into minus. Okay. Now I have to split this into two parts so that when I simplify plus or minus, I should get minus 22x.
When I add or subtract, I should get minus 22x, and when I multiply, I should get minus 168. So 22 and 168, better to factorize 168. On factorizing 168, I am getting 284 za, 242 za, 221 za, 3 7 za, 7 1 za. Now I will try different combinations. Can I take 3 2s are 6 and 2 2s are 4, 4 7s are 28. Can I take this combination? 3 2s are 6x. Okay. And what is remaining? 2 2s are 4, 4 7s are 28. You are having minus, so bigger will become minus, smaller will become plus. 28 में से 6 निकालने से, minus 28 में से 6 निकालने से minus 22x भी आ रहा, मल्टीप्लाई करने से प्लस इंटू माइनस माइनस 28 6 168 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर. परफेक्ट कॉम्बिनेशन है. रैंडमली ट्राई करना है आपको डिफरेंट ये फैक्टर्स में से डिफरेंट कॉम्बिनेशंस. कभी आप 3 2 6 6 2 12 7 2 14 ऐसा डिफरेंट कॉम्बिनेशंस चेक करो. एक्सपीरियंस से आपको क्विकली करेक्ट कॉम्बिनेशन में अराइव करना आ जाता, एक नजर में आ जाना चाहिए. 3 2 6 आना चाहिए आपको, 7 2 14 14 2 28. So quickly analyze and arrive at the correct combination and then go back and solve it. I am not going to write minus 22x. Instead, I will be writing this one. Minus 28x plus 6x minus 21 is equal to 0. So ट्रिक क्या है? फैक्टराइज करना. फैक्टराइज करके उसमें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस चेक करना. Got it? So especially when you have bigger numbers like 168, better to factorize. I am taking common here. 4 is highest common. 4x I am taking. 4 2s are 8. X will remain. 4 7s are 28. X already taken common. Got it? दो एक्सों में एक x कॉमन है, एक x remain inside. Here x is taken common. No need to write here x. No need to write here x. So now I am going to take 3 as common. In this 3 will go. In both of these terms 3 will go. 3 is common. 3 how many times in 6? 2 times. 2x will remain. 3 how many times in 21? 7 times. Are you getting same terms inside the bracket? 2x minus 7, 2x minus 7. Take 2x minus 7 as common. 4x plus 3 will remain. Quickly equate with 0. 2x minus 7 is equal to 0. 2x is equal to 7. X is equal to 7 by 2. Alpha is 7 by 2. 4x plus 3 is equal to 0. 4x is equal to minus 3. X is equal to minus 3 by 4. So beta is minus 3 by 4. So now let us go to formula method. What is the equation we got? Formula
method. What is the equation? 8x square minus 22x minus 21 is equal to 0. What is standard form? Ax square plus bx plus c is equal to 0. What are ABC values? A value is 8. B value is minus 22. C value is again minus 21. Got it? Now write down the formula. Formula to find roots is alpha comma beta is equal to minus b plus or minus b square minus 4ac under root by 2a. Let us substitute in the next page. Let us substitute in the formula. B is minus 22. Alpha comma beta is equal to minus b is minus 22 plus or minus b square minus 4. A is 8. Check. A is really 8. C is minus 21. Under root by 2a. 2 into 8. Now tell minus into minus, it becomes plus. 22 plus or minus 22 square is how much? Can any one of you tell what is 22 square? 484. 484. Here minus into minus, it becomes plus. Let us multiply 4 into 8 into 21. I am getting 672 by 16. On adding these two in the numerator, what would you get? 22 plus or minus 1156 square root by 16 alpha beta is equal to. I will try to find the square root of 1156 quickly. 3 3s are 9. 2 remains, 56 will come down. 3 plus 3 is 6. So shall I try 64? 4 yes, 64 4 256. So what is the square root? Square root is 34. So I will write down alpha beta is equal to 22 plus or minus square root is 34 by 16. In alpha you will take plus. In beta you will take minus. Add 22 plus 34. 56. 56 by 16. 8 sevens are 8 twos are alpha is 7 by 2. Here on subtracting, I am getting 34 22. Subtract. Is it 12? Yes, bigger number sign is minus. 4 3s are 4 4s are. Beta is minus 3 by 4. So shall in the previous case in factorization also 7 by 2 minus 3 by 4. Formula method also 7 by 2 minus 3 by 4. That's it.